जब वो डंडा लेके आए और मारा हम लोगों को, वो सही कर रहा है, वो ये आईएससी के कार्यकर्ता है। प्रशांत भूषण ने कल कहा अपने वक्तव्य में कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं देते हैं, जबकि उन्होंने खुद उस लड़के को मारता हुआ क्लिपिंग है, पूरी मीडिया ने दिखाई है वो क्लिपिंग, जब वो खुद उसको मार रहे थे। क्या ये गांधीगिरी का कौन सा तरीका है? क्या हम जानते हैं अगर उन युवाओं ने गलती करी है, उन्होंने हमें मारा। Well, if you are fed up with the constant power cuts in Assam, brace for the worst with no solution in sight. The Assam State Electricity Board will increase the daily power cuts to meet the acute shortfall in generation. In our spotlight tonight, the power crisis and its causes. Assam is one of the worst hit states in the country, which is facing a severe power crisis due to shortage of coal and gas supplies to power stations across the country. While cities like Delhi, Mumbai and Kolkata are facing an average shortfall of 500 megawatts daily, Guwahati, which till last month was facing an average shortfall of 160 megawatts, is now facing an average shortfall of 250 megawatts during peak hours on a daily basis. This despite the state government restricting power supply to heavy industries in the state from Monday last. As against a peak hour demand of 1,100 megawatts, Assam is getting only 858 megawatts, leading to a shortfall of 242 megawatts. The unrest in Telangana and the earthquake in Sikkim has resulted in the state receiving only 858 megawatts of power daily as of today. The general breakdown of power supply and demand as on 13th October 2011 shows that the state is suffering from an average shortfall of 228 megawatts during off-peak hours, which rises to 242 megawatts during peak hours. The situation has been prevailing for the last 1 week, and the worst sufferers are the common people who are sweating through the sweltering nights and sizzling daytime. Out of the 8 thermal power stations, most of them are generating way below their installed capacities, which include the following: Kathalguri, Namrup, Lakwa, Ranganadi and Kopili thermal power stations. Power Secretary P. Uma Shankar might have urged the coal industry to provide coal to all the power stations in the country. Bigger states Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra are being given more prominence, as the power crisis in these states is even worse than Assam. Going by the present situation, it is unlikely that the power crisis will be solved at the earliest. With power prices in the spot market doubling many folds, smaller states like Assam will always face a problem in bidding for the available power, as states like Delhi, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and West Bengal will be more profitable customers to the private power manufacturers. In such a scenario, the state should be prepared to face even more power outages, as there will be no options left with the ACB but to resort to power cuts. Pranchal Sharma, Frontier TV, Guwahati. And moving on to some other news, Bhutan's 31-year-old King Jigme Khesar tied the knot with Jetson Pema on Thursday morning in a colorful ceremony. The remote Himalayan nation declared 3 days of national holidays to honor the event. The celebrations began at 8:20 in the morning. Pema is a daughter of an airline pilot, widely admired for her beauty and her impact on the love-struck monarch. Let's take a look at the wedding. The beloved king of the tiny Himalayan nation of Bhutan married his commoner bride on Thursday in an ancient Buddhist ceremony at the country's most sacred monastery fortress. King Jigme Khesar, wearing the raven crown, came down from his golden throne in front of a huge statue of Buddha to place a smaller silk brocade crown upon the head of his bride, Jetson Pema. Monks chanted in celebration as she took up her seat beside him as the new queen of the country. The wedding has captivated the nation, which had grown impatient with their 31-year-old bachelor king's lack of urgency to wed. Children composed poems, flight attendants practiced celebratory dances in the old capital of Punakha and proceeded up the high staircase inside. A few minutes later, his 21-year-old bride arrived at the end of a procession of red-robed monks and flag-bearers across a wooden footbridge over the wide blue river beside the fort. International Desk, Frontier TV.
story, love story there. Well, India has sought extradition of underworld don Iqbal Mirchi, a former aide of Dawood Ibrahim, who was arrested in London. India has sought extradition of underworld don Iqbal Mirchi, a former aide of Dawood Ibrahim, who was arrested in London. Mirchi is also an accused in the 1993 Mumbai serial blasts. Foreign Ministry spokesperson Vishnu Prasad said a red corner notice for the arrest of Mr. Iqbal Mirchi had been issued and continues to be valid, which means that he is a wanted person and that we do seek his extradition back to India. The processes involved for his extradition are being initiated. CBI said Mirchi, against whom an Interpol red corner notice is pending since 1994, was living in a 6-bedroom house in the United Kingdom for the last 20 years. This is to recall that a UN report has identified Mirchi as a senior figure on the Dawood gang. The All Nishi Students Union today burned the effigy of Arunachal Pradesh Chief Minister Jarbom Gamlin, accusing him of pushing the state towards anarchy. Besides burning the effigy of the Chief Minister at capital Itanagar, the ANSU activists also damaged a fire tender brought in by the police. The ANSU was also protesting against the police firing at Itanagar on October 11th, in which one person was killed. With clouds of a political kidnapping heating up the atmosphere in the state, Gamlin appeared to be under tremendous pressure. Meanwhile, social activist and top businessman Q has alleged that the present turmoil and unrest in Arunachal is creation of present leadership crisis only with the short-term aim of gaining political mileage. The young activist has called for peace and demanded AICC's immediate attention to resolve the ongoing unrest in the Himalayan state. The unrest in Arunachal Pradesh over the issue of a derogatory article against the Nishi community is yet to die down. The issue took a political turn, leading to various band calls and protests in Arunachal. On Monday, in a group clash, one youth was brutally killed in police firing, which has further aggravated the political crisis. The Dignity rally has now taken a dirty political color, with the Nishis demanding the removal of Chief Minister Jarbom Gamlin. On Thursday, the protesters burned down a fire brigade and some other vehicles. The dead body was being taken to the Chief Minister's residence amidst emotions running high in both the camps. Gamlin is already under pressure from Congress MLAs who are camping in New Delhi to press the High Command for a change in leadership. Social activist Kuyu, in an exclusive interview to Frontiertv, has expressed concern on the ongoing unrest in the state and urged for peace and communal harmony. इलाइट सोसाइटी और आंसू ने बोला था कि गवर्नमेंट को वो आदमी को या प्रेस कॉन्फ्रेंस देता हो या तो अरुणाचल में ला दो। सिर्फ ये किसी निसी को दारी नहीं किया है बोल के उसको सिर्फ बोलने दो, तब जाके निसी उसको माफ किया जाएगा। तो वो चीज को करने में गवर्नमेंट को इतना डिले हो गया। जो बंद कॉल करता है गवर्नमेंट उसको, जो निस और ये जो आंसू जब उसको बोलता है आप उसको ला दो, तब गवर्नमेंट जो है क्या करता है उसका गुंडागर्दी को लगा के उल्टा आंसू को पीटने देता है। तो ऐसा होके उसमें स्टेट में उल्टा प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। जो सारा आज का डेट में अरुणाचल में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो गवर्नमेंट का वजह से हो रहा है। उसमें कोई किसी को आपका कम्युनलाइज नहीं हो रहा है। हम एज एनिसी हम किसी को हम वहाँ में ये हो कभी नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग अच्छा से बेहतर है मिलके, हर ट्रिप जो मिलके नॉन ट्राइबल आदि अपातन निसी सब मिलके बेहतर है। कोई भी हम लोग वहाँ में झगड़ा पिसा नहीं हो रहा है। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट का वजह से हो रहा है। The ongoing imbroglio, coupled with the political upheaval, has completely paralyzed the government machinery. This has caused a major impact on the economy and development of the state of Arunachal Pradesh. The young activist from Arunachal feels that the union government should pay much attention to diffuse the ongoing turmoil. He remarked that the state of Arunachal, with neighbors with China, if neglected, would create a wrong notion among the people. PS और आंसू जो हमेशा यही बोल के गवर्नमेंट को बोल के आया था, सिर्फ उसको सिर्फ मेरा साथ में अपोलॉजी लिखने दो और साथ में या तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा हो, तब जाके हम लोग मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है ये दो काम जो करना चाहिए था वो काम करने में गवर्नमेंट जो नहीं कर सका है। निसी जो है 80% पॉपुलेशन होने का बाद में कभी निसी मारपीट कैपिटल में होके नहीं देखा है, कभी कैपिटल में कभी निसी जो है झगड़ा करके नहीं देखा है, और कभी किसी को धमकी देके नहीं देखा है, कभी किसी को थ्रेटिन मारपीट होके नहीं देखा है। निसी हमेशा सबको मिलके आया है। कल हमारा ये गवर्नमेंट स्पोक पर्सन तो दाबी ने यही स्टेटमेंट दिया है, जो ला रहा है आपस में ला रहा है, कभी वह निसी आपस में नहीं ला रहा है, वह ला रहा है गवर्नमेंट और निसी अपना जस्टिस को दिलाने के लिए ला रहा है। और कल का स्टेटमेंट दिया वाला को भी हम बोलना चाहूँगा, वो कुछ एक
गवर्नमेंट स्पोक पर्सन जैसा वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, उल्टा वो आपस में लड़ाने के लिए स्टेटमेंट दिया है, उसको मैं कंडेम करता हूँ, वो अच्छा बात नहीं किया है। Various political parties, student unions and others have called for peace and harmony in the state to bring back normalcy. Leadership crisis in the ruling party after the tragic death of late Chief Minister Dorji Khandu has become imminent and an open secret. The Congress camp is divided between the present Chief Minister Jarbom Gamblin and PWD Minister Nabam Tuki, the latter being supported by Congress MP Sanjay Takam and former Chief Minister Mukut Mithi. News Desk, Frontier TV. Well, here we'll take a short commercial break. More news on this other side. Stay tuned. नापतोल बचत बाजार, घर बैठे बैठे शॉपिंग का मजा। महंगाई के इस दौर में सिर्फ नापतोल बचत बाजार है जहां मिलते हैं मार्केट के सबसे अच्छे प्रोडक्ट सबसे सस्ते दामों में और पूरे भरोसे के साथ। उसी कड़ी में आज आपको मिलने जा रही है मल्टीपर्पज टूल किट। अब घर के छोटे मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। ये टूल किट आपको बना देगी आत्मनिर्भर। इस किट में स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, कटर, प्लायर जैसे 102 टूल्स है। दीवार में तस्वीर टांगने जैसे कामों के लिए इस टूल किट के साथ आपको मिल रही है ये पावरफुल ड्रिलिंग मशीन। 450 वॉट की ये मशीन 13 mm तक की ड्रिल आसानी से कर दे और इसका वजन भी ज्यादा नहीं। इस किट की MRP है 5,995, पर नाप तौल पर ये मिले केवल 2,499 में। ऑर्डर करें अभी और कैश दीजिए डिलीवरी के समय। ऑर्डर करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करें हमारे नंबरों पर। नाप तोल किया क्या? স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণ, অত্যধিক মছলাযুক্ত খাদ্য, সঘনাই বাহিৰত কৰা খাদ্য গ্ৰহণে লিভাৰটো দুৰ্বল কৰি পেলায় আৰু এনে ধৰণৰ দুৰ্বল লিভাৰক সকলো সময়তে লাগে এক ৰক্ষা কৱচ। লিপছেভ ডিএছৰ ৰক্ষা কৱচ। দাঁতৰ সুৰক্ষা যিদৰে সদায় টুথপেষ্ট, লিভাৰৰ যত্নত সেইদৰে সদায় লিপছেভ ডিএছ। লিপছেভ ডিএছ কেপচুল ডায়েবেটিক লোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অৰ্জুন, আরে তুমি চোন ট্ৰেকেই সলনি কৰিলা। ডাঙৰ মানুহ হ'ল আকৌ। কোন আছিল? অৰ্জুন আমাৰ সৈতে ৰেলত ভ্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ আছিল। মোবাইলত। অৰ্জুন আহা না, এই মোবাইলত পঢ়িনো কি কৰিবা? ঘড়ী দেখুৱালে। কিতাপৰ পৰা টেষ্ট পেপাৰলৈ আৰু বহুতো পকেট লাৰ্নিং। এয়াৰচেল 3G। এয়াৰচেল। University of Science and Technology Meghalaya, 9th Mile, GS Road, Triboy, the dream venture of ERD Foundation to make the region technology vibrant. First academic session commencing from September 2011. সর্বশ্রেষ্ঠ সিমেন্ট মানে টপসেম সিমেন্ট। মেঘালয়ৰ প্ৰসিদ্ধ লাইমষ্টোনেৰে নিৰ্মিত অধিক শক্তিশালী टॉपसेम सीमेंट, मजबूती का भरोसा हमेशा। नापतोल बचत बाजार, घर बैठे बैठे शॉपिंग का मजा। महंगाई के इस दौर में सिर्फ नापतोल बचत बाजार है जहां मिलते हैं मार्केट के सबसे अच्छे प्रोडक्ट सबसे सस्ते दामों में और पूरे भरोसे के साथ। उसी कड़ी में आज आपको मिलने जा रही है मल्टीपर्पज टूल किट। अब घर के छोटे मोटे कामों के लिए इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। ये टूल किट आपको बना देगी आत्मनिर्भर। इस किट में स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, कटर, प्लायर जैसे 102 टूल्स है। दीवार में तस्वीर टांगने जैसे कामों के लिए इस टूल किट के साथ आपको मिल रही है ये पावरफुल ड्रिलिंग मशीन। 450 वॉट की ये मशीन 13 mm तक की ड्रिल आसानी से कर दे और इसका वजन भी ज्यादा नहीं। इस किट की MRP है 5,995, पर नाप तौल पर ये मिले केवल 2,499 में। ऑर्डर करें अभी और कैश दीजिए डिलीवरी के समय। ऑर्डर करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करें हमारे नंबरों पर। नाप तोल किया क्या? আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই খাই বৰ ভাল পায়। মাছ মাংসত অলপ মছলা নহলে খাই ভাল নালাগে। শ্বুটিঙততো খোৱা বোৱাৰ টাইম টেবুল একো নাইয়ে। ঘৰৰ বাহিৰত ভিতৰত মছলাযুক্ত খাদ্য খাই খাই মোৰ লিভাৰটোৱে বাৰু কি কয়? কিনো আৰু ক'ব। সুস্থ লিভাৰৰ বাবে লিপছেভ প্লাছ চিৰাপ আৰু লিপছেভ প্লাছ কেপচুল, যি ডায়েবেটিক লোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। দাঁতৰ সুৰক্ষাত যিদৰে সদায় টুথপেষ্ট, লিভাৰৰ যত্নত সেইদৰে সদায় লিপছেভ প্লাছ চিৰাপ আৰু লিপছেভ প্লাছ কেপচুল। Welcome back. You are still with Frontier News.